Welcome back here with us on Times Now. Let's get you the latest that we are getting for you from Uttar Pradesh. 8 police personnel, including Deputy SP Devendra Mishra, lost their lives after they were fired upon by various criminals when the police team had gone to raid an area. Chief Minister Yogi Adityanath has expressed his condolences to the families of 8 police officials and has also assured strict action against the criminals in this case. And those are the visuals that we have for you at this point in time. These are coming from Kanpur. In a shocking news, 8 police personnel lost their lives. They went to raid an area in Kanpur, but at the same time, these criminals who were hiding in nearby areas, they started firing upon the police officials who had gone there, and 8 of them lost their lives. Some got injured as well. It is a shootout that happened in Kanpur. 8 cops lost their lives. We are also being told that Chief Minister Yogi Adityanath has expressed his condolences to the families of these 8 police officials and has assured strict action against the criminals in this particular case. In fact, we have also got a reaction at this point in time from UP DGP, who is saying that Vikas Dubey is a vicious criminal. There are about 60 cases against him, and he and his gang was responsible for this shootout that happened when these police officials from Uttar Pradesh went to raid this area where perhaps Vikas Dubey was present. It seems that he and his team got information about the arrival of police officials there, and they were prepared. And the UP DGP, HC Avasthi, has also said that police went there for an operation. When they got down there, the criminals started firing. Then police officials retaliated. But since then, since the group of Vikas Dubey was at a height and the number was large, that's the initial information that we have for you. That is the reason why 8 police officials who were part of this team which had gone to raid this area in Kanpur got killed. 8 policemen losing their lives in a shootout is definitely a shocking news that we've got for you this morning from Kanpur. And we will be going across to my colleague Amir Haq in just a bit to get you more information as to what is happening now in this case, what is going to be the scope of the investigation. Was there some insider within the police department who informed perhaps these people about this raid that was being planned by UP police officials? Let's go across to Amir Haq joining us on the broadcast. Amir, firstly, explain to us, when did this happen? What exactly has happened? Well, Hina, this was late last night around 1 a.m. when the police team, in fact, a combined police team of 3 police stations, the Shivrajpur police station, the Chaubepur police station, as well as another police station in the vicinity, they had all made up a team to raid the house of Vikas Dubey in this particular village, which falls within Bithur area of Kanpur, and they were to raid the place and arrest Vikas Dubey, who was wanted in a number of cases. Now, the police team did understand that he happens to be a dreaded criminal, somebody who has a checkered past over the last more than 20 years and has a number of heinous cases registered against his name, including that of murder and attempt to murder. But perhaps the police team was caught unawares because a number of such approach roads to the house of Vikas Dubey were actually blocked. They walked into the trap which was laid down by Vikas Dubey and his associates, and which was why they were completely surrounded. Vikas Dubey and his associates were on vantage points on the top of buildings and on the top of houses in the area. They were heavily armed and had enough supplies of arms and ammunition. And once the police team, which had gone there to raid him, was surrounded, it was a complete washout for the police. There 8 casualties there. A senior DSP rank police personnel was killed. 3 sub-inspectors, including the station house officer of the nearest police station, taken down. Also 4 police constables killed in the firing that happened over there, the shootout that happened over there. So clearly,
while the senior-most police officials from the region are there, they are also looking at the possibility of perhaps apprehending Vikas Dubey and his associates who are on the run since last night. But it definitely is a shocking jolt for the UP Police Department, which has prided itself over the last 3 years for the kind of campaign it had carried out against organized crime and criminals. I'm just interrupting you there, requesting you to stay on with us. In fact, we have got that reaction coming in from UP DGP as well, HC Awasthi. Here's what he has to say. बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे. इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब दर्ज. तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की. लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में हमारे आदमियों पे गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं. प्रायोरिटी इस ऑपरेशन को जो कंटिन्यू कर रहा है, करते हुए न केवल इस अपराधी वरन इसके जो साथी हैं जो इसमें शामिल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना. Let's go back to Amir, who continues to be with us more on this. Amir, you're telling us that this raid was carried out around 1 a.m. on the intervening night of July 2nd and 3rd. And at the same time, Vikas Dubey and his other men of the gang that he belongs to were all prepared. It means that perhaps, some information had gone to them, because at 1 a.m. nobody stands on the rooftops prepared with arms in hands. Well, absolutely. And this is the most worrying factor out of the entire sequence of events, Hina, because there were police team comprising of police personnel from 3 police station areas. They obviously had a plan in mind and they understood the kind of background from which Vikas Dubey comes. And that was why they were prepared when they went in for the raid. Who was it who actually leaked the information leading to this kind of an ambush being laid by Vikas Dubey and his henchmen and associates? Is something which should surprise police enough. So the police is investigating on this lead as well as to who actually leaked the information of police team reaching out to raid Vikas Dubey's hideout in this particular village over there, which was why the element of surprise was taken away. In fact, it was the police who was actually surprised with the manner in which the ambush was laid by Vikas Dubey. And this clearly happens to be an incident of which there is actually no precedent in the recent past. Over the last several years, we have never heard of this kind of an ambush laid down by somebody who's a hardcore criminal, gunning down 8 policemen in cold blood. This is something which should actually shake the foundations of the police department, today, because this is something that is really, really shocking. Right. Amir, requesting you to stay on with us. We have Mr. A.L. Banerjee, who is former UP DGP, joining us on the broadcast as well. Good morning, Mr. Banerjee. Thank you for speaking with us here on Times Now. Have you heard of something like this happening in UP during your tenure, before or after that? You see, when I had joined the police in 1979 and thereafter, dacoit gangs used to operate. And of course, whenever an encounter took place, it was in front of each other. You had firing from both sides, and if there were people killed, it could have happened on both sides. It used to happen on both sides. Subsequently, when the terrorism, the Khalistani terrorism started, then too in the Tarai area, there have been incidents of somewhat of this kind, but the present situation, the present thing that has happened in Kanpur is absolutely unprecedented. I've never ever heard of anything of this kind, other than the fact that when the extremists blew up a PSC truck sometime about approximately 25 to 30 years back in Mirzapur district then, Sonbhadra now, but this has not happened. And I believe the police had absolutely gone in unprepared, but they seem to be confident of the fact that they were reaching out to a criminal, or they were going to a place where they would face no. Okay. They seem to be unprepared. They seem to have that.
Okay, so your sense is that police went unprepared to deal with a situation like this when they had to nab a criminal who has about 60 cases against him, Vikas Dubey. Mr. Banerjee, appreciate you joining us here on Times Now and sharing with us your perspective. We are getting another reaction. Listen in. घटना को बताएंगे कैसे क्या घटना को अंजाम दिया बदमाशों ने, ये क्या कैसे क्या हुआ था यहाँ पे। देखिए, एक पुलिस में FIR दर्ज हुई थी जाते हैं चौबेपुर थाने में जाते हैं, और वहाँ उस क्रम में जाते हैं CO बिल्लौर के नेतृत्व में 3 SO की टीम, जिसमें शिवराजपुर, चौबेपुर और हमारी बिठूर की जो है पूरी टीम जाते हैं, लगभग हमारे पुलिसकर्मी यहाँ गाँव में जाते हैं। जो जैसे ही दबिश देने आए हैं, गाँव के छतों से जाते हैं लोगों ने जो है पुलिस पार्टी भी जो है अपना आक्रमण कर दिया है, जिसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं जाते हैं, इसमें हमारे CO साहब, 3 सस्पेक्टर और हमारे 4 आरक्षी जाते हैं जो शहीद हुए हैं जाते हैं। और उसके बाद जाते हैं पुलिस पार्टी जो है हमारी विभिन्न कन्नौज की, कानपुर देहात की और यहाँ स्थानीय जाते हैं सभी थानाध्यक्षों को बुला करके यहाँ काउंटिंग की जा रही है जाते हैं जो है, और ये एक दुखद घटना है जाते हैं जो है, और लोगों ने पुलिस को जो है चैलेंज किया जाते हैं। हम इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें एक बात समझ आई कि CO साहब का पैर भी काटने का प्रयास किया गया, क्या सच है? आप देखिए, ये चीजें जैसे उनको दौरा करके जाते हैं, आपने भी जाते हैं, मैंने घटनास्थल भी यहाँ आपको दिखाया जाते हैं, बहुत चीज जाते हैं, मतलब निशंस जाते हैं, उनके साथ उनकी हत्या किए जाते हैं अपना जो है। अब ये पोस्टमार्टम में जरा ये स्पष्ट हो जाए कि कभी ये हो सकता है कि गोली से ही जाती इस रूप में हुआ हो जाते हैं कि अपना जाते हैं जिसके कारण ऐसा हुआ हो, या जैसा आपने बताया जाते हैं, अब पोस्टमार्टम में ही स्पष्ट। पुलिस का वेपन भी मिलता है क्या? हाँ, पुलिस के वेपन मिसिंग है जाते अपना जाते हैं, 2 हमारे पिस्टल मिसिंग है, इसके अलावा जाते हैं 1 इंसास, और अभी जैसा संज्ञान में लाया गया है जाते हैं कि AK-47 भी जाते हैं। क्या विकास दुबे फरार है, उसके साथी फरार है, क्या उनको कॉम्बिंग में घेरा गया है कहीं पे? क्या पुलिस की हमारे IG साहब और सब अपना जाते हैं, SSP साहब जो है, और आसपास की जो टीमें हमारी जो है काम्बी में और विभिन्न जगहों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है जाते हैं, और शीघ्र हम आपको जाते हैं परिणाम से अवगत कराएंगे। कुछ जानकारी मिली कि 3 इसमें बदमाश मारे हैं पुलिस वालों ने? नहीं, अभी जैसे कोई जानकारी होगी हम आपको जो है स्पष्ट रूप से बताएंगे जो है। सर, फायरिंग सिर्फ यहीं से हुई थी कि आसपास के घरों से भी हुई? नहीं, आसपास सभी, जैसा मैंने बताया कि छतों पर लोग थे जाते अपना जो है, और जब हम लोग आए हैं तब ना छतों को चारों तरफ जाते हैं विभिन्न वेपन से जो फायर किए थे, उसके कारतूस जो है चारों तरफ जो है बिखरे हुए थे जाते हैं विभिन्न घरों से कम जाते हैं, मेरा मानना है कम से कम जो है 15। एक जानकारी इसमें और मिली कि पुलिस के जो वेपन छीन के ही बदमाशों ने चलाए हैं। नहीं, इसकी संभावना बहुत कम है जाता अपना जो है, और जैसा हमने बताया ना, बहुत चीज़ें ऐसी होती है विवेचना के बाद, और गहन छानबीन हम लोग भी जब यहाँ तत्काल आए हैं, रात का समय था, तो किसी भी संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरा मानना है कि इनके पास अपने उपकरण थे, और उसके बाद अधिकतर जब पुलिस जो है अपना जाते हैं इसमें हमारे लोग शहीद हो गए जाते हैं, तो उसका फायदा उठा करके उन्होंने जहाँ पे आप खड़े हैं इसके ठीक पीछे विकास दुबे का घर है, घर में इसमें कौन कौन मौजूद है? घर में जाते एक महिला है जो अपना जाते हैं, और इसके अलावा जाते हैं गांव के और लोग भी, जैसा आपने देखा अधिकतर लोग भाग गए हैं जाते अपना जो है, और उसके बाद जाते हैं जो हम रेवन्यू के लोग भी जाते हैं यहाँ पर आ गए हैं, हमारे ADM साहब भी आ गए हैं जाते हैं, SDM और घर में जो उसकी महिला मौजूद है कौन है वो? अब उनके रिश्तेदार बता रहे हैं जाते ना, ये सब चीजें आप ही जाकर के अपना जाते बता रहे हैं कि उन्हीं से जुड़ी हुई हैं, और महिला है और उनके साथ छोटा बच्चा भी है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, क्या किसी प्रकार का कोई Let's now go across to Anurag Bhadoria of the Samajwadi Party, who is joining us on the broadcast as well this morning. Anurag Bhadoria, good morning. Thank you for speaking with us here on Times Now. आप किस तरह से देखते हैं ये जो शूट आउट हुआ है, 8 पुलिस वालों की मौत हो गई है, कई लोग कह रहे हैं कि शायद पुलिस प्रिपेयर्ड नहीं थी इस तरह के रेड के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में जो हालत कानून व्यवस्था की है, समाजवादी लोग लगातार इस बात पे प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार को बता रहे थे कि दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश के अंदर में मर्डर हो रहे हैं, चोरियां डकैतियां हो रही हैं, लेकिन सरकार सुनने को नहीं तैयार थी। और सरकार को आगाह किया जाता था बार बार कि बदमाशों का, चूंकि उत्तर प्रदेश की सरकार इस चीज जाति धर्म की राजनीति में इतनी व्यस्त है कि वो लोगों की सुरक्षा के बारे में सोच भी नहीं पा रही है। आज पुलिस को गोलियों से उड़ा दे रहे हैं, उनको शहीद कर दे रहे हैं बदमाश, तो सोचो बदमाशों की कितनी हिम्मत है। आप हिम्मत का अंदाजा लगा सकिए। आप सोचो क्या हालत होगी उत्तर प्रदेश के लोगों में, जहां पे 8 पुलिस वाले को शहीद कर देते हैं बदमाश, और एक छोटे माने ऐसे ही बदमाश, कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा उनके पहले से बहुत बड़ा नाम रहा हो। इसके मतलब सोचो कि बदमाशों की क्या हिम्मत बढ़ गई है, माने बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है, तो जनता बेचारी कैसे, जनता की हालत क्या हुई होगी। आप सोचो, जहां पुलिस को मार गिराते हो, उनको गोलियों से उड़ा दे रहे हो, शहीद कर दे रहे हो, सोचिए आप क्या हिम्मत है उनकी। तो जनता तो डरी सहमी है ही उत्तर प्रदेश के अंदर में, जंगल राज चल रहा है, माने किसी को ही मार दो। शायद यही योगी जी का राम राज है, पुलिस का जो चाहे पुलिस को मार दे, पुलिस वाले जिसको चाहे उसको मार दें,
माने दोनों तरफ से मार काट चल रही है, जनता एक दूसरे को मार रही है, कभी जर्नलिस्ट को भी मार देते हैं ये लोग गोलियों से। अभी जर्नलिस्ट को भी उड़ा दिया था कानपुर में बदमाश ने, तब भी हमने बोला था जर्नलिस्ट को उड़ा दिया, कानपुर से दिन दहाड़े गोली मार दी, कोई जी। सुनने वाला नहीं। जर्नलिस्ट को मार दिया, कोई बात नहीं, सरकार को क्या पड़ता है, छोटा सा जर्नलिस्ट है, All उसकी right. न्यूज तो बननी नहीं है। All right. Anurag Batoria, appreciate you joining us here on Times. So, Samajwadi Party there once again raising the issue of lawlessness coming back in Uttar Pradesh. We'll be tracking the story closely ahead as well. Slipping into a short break for the moment. More on the other side.